इस वर्ड से सबको अवेयर हो, वेक्टर. So vector has number 1 magnitude and second direction. Why we need direction for vector? Because for scalar what is required? Magnitude. But for vector we need to define its direction also. So why this direction? Because अगर फिजिक्स सीखना है ना, तो एक चीज़ हमेशा, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखो, why. कोई भी डेफिनेशन है, कुछ भी है, तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? Why we need direction for vector? क्योंकि कोशिश ये नहीं करना है कि इसको याद कर लें, that will not serve any purpose. तुमको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो क्यों डायरेक्शन चाहिए वेक्टर में? मान लो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. कोई अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें, सपोज यू आर एट सम लोकेशन से एक्स एंड तुम अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हो एंड यू आस्क कि तुम्हारे घर तक आना है, कैसे पहुंचेंगे? तो योर फ्रेंड वाई सेज कि आई एम, एंड ही आस्क्स यू कि तुम कहाँ पे हो, है ना, टिपिकल जो क्वेश्चन होता है. And then he says कि you are approximately 6 kilometers from my house. 6 kilometers from my house. तो इस 6 किलोमीटर वाले इंफॉर्मेशन से क्या तुम उसके घर तक पहुंच जाओगे? What you will ask for? Direction. You will ask for, obviously. Next question that you will ask is in what direction? So there are certain quantities जिसके complete description के लिए क्या required? Direction. Now, if you say, if your friend says कि हम 6 किलोमीटर दूर हैं तुमसे, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है? इनकम्प्लीट है. तो उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या बताना होगा? डायरेक्शन. बट ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक क्वांटिटी के साथ नहीं है. जैसे सपोज आउट ऑफ से 2 कोई एक बहुत वेट गेन कर लिया था और वो डाइटिंग कर रहा है. सपोज तुमको ये इन्फॉर्मेशन है कि वो डाइट पे है, तो तुम ऐसे ही बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिए कि तुम्हारा अभी वेट कितना है ना. ही सेज कि नहीं अब मेरा कम हो गया, नाउ आई एम 50 kg. फाइन. तो अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे किस डायरेक्शन में, कि 50 kg किस डायरेक्शन में? ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा? नहीं आएगा ना. लेकिन जब वो तुमको एड्रेस बताया कि डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो क्या क्वेश्चन दिमाग में आया? डायरेक्शन. तो जब तुम मास की बात करते हो, तो डू यू नीड टू स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन? इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है किससे? केवल उसके वैल्यू से. बट वेक्टर के लिए क्या बताना जरूरी है? डायरेक्शन. यू नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाई यू नीड डायरेक्शन, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन वी नीड टू डिफाइन व्हाट? डायरेक्शन. Now point is, if a quantity has magnitude as well as direction, then is it a vector? For example, if we draw like this, और यहाँ एक की है, एक सेल है और तुम इस की को क्लोज कर दिए and you have one ammeter here. What happens? There will be current or not? इस सर्किट में करंट होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा. आमीटर यू विल हैव सम डिफ्लेक्शन. सपोज करंट इज 5 मिली एम्पियर. सो करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इज करंट अ वेक्टर? Current is not a vector, although current has both magnitude and direction. So it means either this definition of vector is wrong or this definition is incomplete. So we need to add something more here. We need to add some point number 3 here. Fine. So vector is magnitude, direction plus something. What is that something? We'll come to that in a moment. So first, write this down, leave space for point number 3, then we will proceed. Next is, leave space for 2 lines and then write a question, how we
how we write vector. How we write vector. How we write vector. So for vector, we place an arrow overhead. This is representation of vector. Now this does not give you direction of vector. It simply tells you that this quantity A is a vector. This is how we write a vector. We write like this also, AB. Now in some textbook, what will you find? That vector is in bold face. Instead of arrow, it will be bold face. Because if suppose you are typing anything in computer or say mobile, any word processor you are using, it is much easier to do what? Place an arrow or bold it? Placing arrow is easy or difficult? Difficult. What is easier? You select it and then you control B, what happens? You make it bold. But when you are writing, what will be easier? Arrow. So we always follow this. But in old textbook, in NCERT book also, what you will find? Vector is in bold face. So you should be very clear about it. And then for magnitude of vector, we use the symbol. We read this as modulus of vector A. Mod of vector A. Modulus or mod. Or instead of that mod, you can also write A without any arrow. That also is magnitude of a vector. So modulus of a vector means what? Modulus of vector means magnitude of that vector. And जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, उनको बहुत सारा मैथ का स्किल एक्वायर करना होगा. तो ऐसा एक कॉर्नर में कहीं कॉपी में लिखो मैथ स्किल. I will keep on doing this. किसी एक कॉर्नर में लिख लो मैथ स्किल. और जिन लोगों का मैथ्स है वो तो मैथ्स में पढ़ोगे या जानते भी होगे बहुत सारे लोग. Mod of x is equal to x if x is positive and is equal to minus x if x is negative. This is how mod is defined. Mod of any quantity, mod of x is equal to x if what happens? X is positive and is equal to minus x if x is negative. It means, it simply tells you, suppose mod of 2 is simply 2, but if you take mod of minus 2, what you get? Plus 2. Mod of minus 2 will be plus 2 or not? Why? Because minus 2 is a number which is less than 0. So answer is x or minus of x. But how much is x? Minus 2. So how many times minus sign is there? Twice. So what you get? Plus. So moral of story is, if you take mod of anything, you get positive value or not. Mod means what number? Negative number or positive? So keep this thing in mind. Mod means you'll get positive value. Negative value is not possible. And we are using mod symbol for vector or magnitude of vector? So can we say, come back here, can we conclude magnitude of vector is always positive? So write that. Magnitude of vector is always positive. Magnitude of vector is always positive. So whenever you shall be dealing with vector or magnitude of vector, keep this thing in mind. Its magnitude cannot be negative. It is always positive. Fine. Now, there are special type of vector used in physics known as unit vector. We will discuss about unit vector later on. For unit vector, we use symbol like this. We read this as cap or hat. This symbol we read as cap or hat. So a cap or a hat. That represents a special type of vector known as unit vector. That is unit vector.
So you know how to write a vector. You are supposed to place one arrow for magnitude. Either you take mod sign or that letter without any arrow, and cap or hat is for unit vector, special type of vector known as unit vector.